Good afternoon, everyone. I am Anushka Chhabadia, and today we are sitting with Bimal sir, who has more than 25 years of experience in the field of indirect taxation. So today this meeting will focus on the recent developments in the GST. So, uh, so Thank yes. you very much. We are, welcoming all the audience, and we are trying to update you with the latest advisories issued by GSTN portal. So one by one, we will discuss those advisory for easy digest and your compliances. Thank you, sir. Thank you. Sir, recently this advisory was issued by GSTN that they have that proper numbers should have been inserted by the taxpayers. जैसे कि एक पार्सल वे बिल आया था और एक ई वे बिल है, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है और फिर अब जीएसटीएन पोर्टल बोल रहा है कि हमें यहाँ पे प्रॉपर नंबर्स को डालना पड़ेगा। ये एडवाइजरी क्यों आई है? मतलब ये रिसेंटली आई है 4 अक्टूबर 2024 में ही, और ये एडवाइजरी आई क्यों है? Let me, tell to my all viewers, you have to do proper entry. Proper entry of what? Railway receipt number or parcel waybill number. And you're generating this railway receipt number or parcel waybill number from parcel management system of Indian Railways. So whenever you're transporting goods through railway, you get dedicated railway receipt or parcel waybill number from parcel management system of Indian Railways. Now what GSTN has issued the advisory, they wanted you, whenever you're generating eBay bill, you must update, and there should be proper entry of railway receipt number or parcel waybill number as generated from parcel management system of Indian Railway in your part B of eBay bill. Why you need to do that? Simple. That there would be proper checking and verification. And how it would be done? Recently, the parcel management system of Indian Railway got integrated with eBay bill portal. So whatever railway receipt number or parcel waybill number you're putting in part B of eBay bill on eBay bill portal, that get cross-checked and verified because data is flowing from parcel management system to eBay bill portal. So there were a lot of, error in the past. We have seen certain activities that the correct numbers are not being entered by the taxpayer, and there may be some transaction prone to tax evasion. So to done away with, अब आपको properly रेलवे रिसीट नंबर या पार्सल वेबिल नंबर जो पीएमएस से मिलता है वो आपको पार्ट बी ऑफ ईबे बिल पोर्टल पे डालना पड़ेगा। ये तो हुआ जब आपका गुड्स डायरेक्टली रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। जब आप मल्टी ट्रांसपोर्ट मॉडल पे वर्क कर रहे होते हैं, यानी कुछ एरिया आपने रोड के जरिए ट्रांसपोर्ट किया और कुछ एरिया आपने रेलवे के जरिए ट्रांसपोर्ट किया। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका फैक्ट्री से माल निकला और रेलवे स्टेशन तक गया, जो बाय रोड गया, ट्रक में गया, और फिर देन उसके बाद वो रेलवे के जरिए गया, जिसको हम मल्टी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसे केस में जब आपने ईबे बिल जनरेट किया था तो पार्ट बी ऑफ ईबे बिल पे आपने ट्रक का नंबर डाला था, लेकिन जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, अब वो रेलवे से जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ईबे बिल पोर्टल पे जाके मल्टी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। जैसे ही आपने मल्टी ट्रांसपोर्ट मॉडल को टिक किया, वो आपको रेलवे का ऑप्शन देगा, आपने रेलवे में टिक किया, और टिक करते ही वो आपसे पूछेगा रेलवे रिसीट नंबर या पार्सल वेबिल नंबर, जो आपको पीएमएस पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम जो इंडियन रेलवेज के पोर्टल से मिला है, वो आपको पार्ट बी में अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने सेम नंबर डाला तो वो मैच कर जाएगा और आपका ईबे बिल फर्दर अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत रेलवे रिसीट नंबर डाला या पार्सल वे बिल नंबर डाला,
तो फिर वो एरर दिखा देगा। ये क्यों? क्रॉस चेकिंग, वेरिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, एरर फ्री और जितने भी अनस्क्रूपुलस ट्रांजैक्शन जो टैक्स इवेजन प्रोन थे उनको रोकने के लिए इस इंटीग्रेशन को किया गया है। और जीएसटीएन की एडवाइजरी जो 4 अक्टूबर 2024 को आई है वो ये कहती है प्रॉपर एंट्री कीजिए, यानी पार्ट बी को प्रॉपर रेलवे रिसीट नंबर या पार्सल वेबल नंबर से अपडेट कीजिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आप तो सही डाल रहे हैं, यू आर पुटिंग द राइट रेलवे रिसीट नंबर, बट स्टिल एरर आ रहा है। तो एडवाइजरी ये कहती है यू मस्ट रेज द टिकट, आप टिकट रेज कीजिए, दे विल रिजॉल्व द इशू अकॉर्डिंगली। बट दिस एडवाइजरी इज टॉकिंग अबाउट प्रॉपर एंट्री, entering the correct railway receipt or parcel bill number as generated from PMS of Indian Railways in Part B of eBay bill on eBay bill portal. होप क्लियर है अनुष्का, आप समझ गए कि इस बैकग्राउंड, इस जीएसटीएन एडवाइजरी का मतलब क्या है। दिस वाज आवर फर्स्ट एडवाइजरी। अनुष्का। यस यस सर, बिल्कुल समझ गई। मतलब बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के साथ, और बहुत अच्छे से हमें ये समझ में आ गया। अब जीएसटीएन ने एक और एडवाइजरी इशू की थी अक्टूबर में ही, और उन्होंने कहा कि हम मैपिंग और डीमैपिंग करेंगे ऑफिसर्स का। अब ये किस लिए इशू किया गया है? मतलब हम इनको हम कैसे इनको डीमैप करेंगे या मैप करेंगे, हमें कैसे इफेक्ट करेगा? अनुष्का, लेट मी टेल यू, ये जीएसटीएन ने नहीं किया। ये जीएसटी पॉलिसी विंग ने एक इंस्ट्रक्शन इशू किया है, इंस्ट्रक्शन नंबर 4/2024, डेटेड 4 अक्टूबर 2024। अब ये है क्या, वी नीड टू अंडरस्टैंड। डीजीओबी, डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस, ने एक रेफरेंस दिया और उन्होंने ये रेफरेंस दिया कि आप देखेंगे जीएसटीएन पोर्टल पे जीएसटी ऑफिसर मैप्ड है, यानी टैक्स पेयर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका जुरिस्डिक्शनल जीएसटी ऑफिसर कौन होगा ये मैप्ड है। लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम के बाद या फॉर आइदर और रीजन वो ऑफिसर या तो उस जगह से कहीं ट्रांसफर हो गया या ही इज बीइंग रिलीव फ्रॉम दैट पोजीशन, तो यानी वो आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर नहीं रहा, तो इसकी डी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो डी मैपिंग जब तक आप नहीं करेंगे तो जीएसटीएन पोर्टल पे उसी ऑफिसर का नाम आ रहा होगा जो वहां से ट्रांसफर हो गया है या रिलीव कर दिया गया है। तो ऐसे केस में देखा गया था कि जब तक आपने डी मैपिंग जीएसटीएन पोर्टल पे नहीं की तब तक वो पुराने ऑफिसर का नाम आएगा। तो ऐसे कई केसेस देखे गए कि फ्रॉडुलेंट रिफंड सैंक्शन हो गए उसके नाम पे, जबकि वो उस दिन ऑफिसर है ही नहीं है। कई एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज डी मैपिंग नहीं हुई थी। तो अब इन्होंने कहा सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ मैपिंग एंड डी मैपिंग, यानी जब जो ऑफिसर आए उसकी मैपिंग कीजिए और जो ऑफिसर जाए उसकी डी मैपिंग कीजिए। यानी जो ऑफिसर रिलीव्ड हुआ उसको एक फॉर्म साइन करना पड़ता है GFR 3333, यानी जितने जीएसटी ऑफिसर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लर्निंग कर्व, आपने जिस दिन उस पोजीशन से रिलीव हुए या ट्रांसफर हुए फॉर योर ओन इंटरेस्ट आप GFR 33 साइन कीजिए। और साइन करने के बाद आप किसको देंगे, ये इंस्ट्रक्शन इस बात को भी कहता है इसको कौन मॉनिटर करेगा, इसको मॉनिटर करेगा आपका जुरिस्डिक्शनल जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर। एक कॉम्प्लायंस रिपोर्ट बनाएंगे वो, और इस कॉम्प्लायंस रिपोर्ट को देंगे आपके जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर को। यानी आपके कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर को इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी फॉर द मैपिंग एंड डी मैपिंग ऑफ जीएसटी ऑफिसर ऑन जीएसटीएन पोर्टल। इट इज हाईली एडवाइजेबल ऑल्सो कि अगर आपने डी मैपिंग नहीं की और वहां पे वो ऑफिसर है ही नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी कहां रही। सो फॉर बेटर ऑफ इट इज हाईली एडवाइजेबल ऑन रियल टाइम बेसिस इसको मैप किया जाए, और जो ऑफिसर ट्रांसफर हो गए या रिलीव हो गए फॉर देयर ओन इंटरेस्ट
अपने प्रोटेक्शन के लिए वो GFR 33 भरे एंड मेक इट ए पॉइंट के GSTN पोर्टल पे उनकी डीमैपिंग हो जाए. I hope this will also help not only taxpayer but to the tax officer as well. Anushka. Yes, sir. I hope all the officers are watching this video and are in the meeting to keep the compliance on GFR 33. So, sir, what is the gross revenue or net revenue of the September 2024 regarding GST? So this question is again very important. Like, you must be knowing that few months before, Honorable Finance Minister has said they are not going to give you any official number, but maybe some unaudited numbers will be shown for respective month collection. For September 2024, they have said that gross GST revenue collection, total gross GST revenue collection is 1,73,240 crore rupees. And there's a growth of 10.4% when you look at September 23 versus September 24. So this is a gross collection. What about the net collection? Net collection is coming out 1,52,782 crore rupees. A detailed sheet is also being given in the description box, which you can download. So what is the difference between gross and net? Gross consists of everything: CGST, SGST, IGST, everything. And net is coming out only after deducting the refund. Refund which is being given, domestic refund, IGST एक्सपोर्ट रिफंड, उस रिफंड के फिगर को माइनस कर दिया जाता है, विच इज अराउंड 20,458 करोड़ रुपीज इन सितंबर 24. सो उसको डिडक्ट करने के बाद नेट आपका नेट GST रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द सितंबर 24 इज 1,52,782 करोड़ रुपीज. क्या इस फिगर को हम फाइनल मान लें? नीचे एस्टेरिक्स के साथ लिखा हुआ है कि जब ये फिगर फाइनल करेंगे तो ये फिगर को चेंज हो सकता है. So this is for your knowledge, September 24. What is the GST revenue collection, gross and net? Anushka. Thank you, sir. Sir, taking you to another advisory, GSTN has also introduced this advisory on 1st October 2024. It stated that they are introducing this GSTN e-services app advisory. It will replace e-invoice QR code verifier. Why this advisory has been issued, and how will this give an advantage to the taxpayers? Very simple. Whenever you see any improvement, it is always meant for with extra feature, extra function, and more giving the option for anyone who are using that app. App is only to verify. Initially, they were having e-invoice QR code verified app. So whenever e-invoice is being generated, you can verify through that app B2B e-invoices. But now they are going to replace, as per the advisory issued by GSTN on 1st October 2024, by GSTN e-service app. This e-service app will give you the real-time information whether the e-invoice which is being generated, B2B e-invoice, is correct and it is coming out from IRP portal, invoice registration portal. You can check IRN number, invoice registration number, so that whatever e-invoice generated can be cross-verified, checked through this particular app. This app is also going to give you the facility to check the GSTN and PAN number of your supplier, return filing status. Whatever search result is coming out through this app, you can share with other counterpart, other stakeholders. So this app going to give you the number of facilities, options to search and verify the authenticity of B2B e-invoices. And this app is going to be launched on Google Play Store or Apple Play Store very soon. So you can download this one to check and verify B2B e-invoices. Anushka. So,
talking about transparency and verification, so GSTN has also come up with the biometric Aadhaar authentication. So this is also in similar lines with respect to cross verification, transparency, and compliance. Why have they come up with this advisory on Aadhaar authentication? It has specifically been rolled out in Odisha. It is rolled out in, as a pilot project in a different state, prominently Gujarat. Why the government has introduced biometric Aadhaar authentication and document verification for simple reason. They want to take out, they want to done away, they want to cut all unscrupulous person from supply chain. Those who have taken fake registration and passing on fake credit in the supply chain. We have seen in the past lot many unscrupulous taxpayer has taken the registration with forged documents, and they are passing on credit which is fake credit in the supply chain. So to cut them out from supply chain, this proper procedure is being applied as a pilot project in different state, as I said, in Gujarat. Similarly, for Odisha, this functionality is being now launched on GSTN portal. It is from 28th of September 2024. So what happened? GSTN portal will identify the relevant taxpayer, the registered person, on the basis of data analysis and risk parameter. So they will check if some person looks like to them unscrupulous, or he is not complying with or having some kind of risk parameter. They will invite him for getting biometric Aadhaar authentication done at GSK, GST Seva Kendra. So there would be appointment. You need to go to their GSK Seva Kendra. Your photograph would be taken. Your biometric Aadhaar authentication would be done to cross-check and verify that you are the authorized signatory and you are the person as the authorized representative who got this GSTN issued. This is, and then document verification for your registered premises. It is for such registered person, they will identify and intimate you. And for Odisha, this scheme is being launched, and this is what the GSTN advisory. So for Odisha, you might be intimated, but in case you want by yourself, that no, let me do myself biometric Aadhaar authentication and getting my data document verification done, you can always go to GSK Seva Ken and suo moto of your own. Also, you can offer yourself that I want to get it done. So tomorrow there is no if and buts in the mind of GST officer. So both way, we are cutting them out. Those who are unscrupulous taxpayer, taken registration, filing one but not paying the taxes, passing on fake credit in supply chain, and those who wanted to get it done, they are also most welcome. With this process, a supply chain will get purified. यानी जितने भी चोरी करके जिनने रजिस्ट्रेशन लिया था, एटलीस्ट वो सारे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे. तो फेक क्रेडिट की जो चैलेंज आज हमारे सामने है, उसको हम कुछ हद तक ठीक कर पाएंगे. इस प्रोसेस में ये बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज वर्किंग वेल, और इसके आउटकम और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं. पास्ट में देखा गया था कि आधार नंबर कुछ है, पैन नंबर कुछ है, फोटो किसी और का है, जिस प्रेमाइसेस के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो प्रेमाइसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो उसको कैसे चेक किया जाए, कैसे वेरीफाई किया जाए? इसको ठीक करने के लिए ये बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, आपका फोटो लिया जाएगा, आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे. गुड फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर सप्लाई चेन and for input tax credit. Anushka. Thank you, sir. Sir, this has been very enlightening. Also, this one last advisory. So there was this recent hue and cry regarding on the portal
that the GST portal will archive our records, GST records, that returns we were filing on the portal. Why was this in the market? Why was this advisory issued by the GSTN? And why was this for specifically 7 years? See, if you look at this GSTN advisory, which was issued on 24th of September 2024, they have said very clearly that GSTN portal is having archival policy for 7 years to maintain the data for 7 years. So keeping that in mind, they will, archive the return data and documents, whatever, from their GSTN portal. It was 24th September 2024 advisory, and as per that 1st August 2024, my July 17 return data will go away. I will not be able to see. Similarly, on 1st of September 2024, my August 17 data will go away, keeping that 7-year policy in their mind. And similarly, from 1st October 2024, my September 17 data will go away. So they advise all the taxpayer to download such data before it is going for archival. That is what they suggested in that advisory. Now I'm coming back to the point. Recent advisory of 29 September 2024 by GSTN. What they are saying, they have received the request from the freight that no, it should not be done. And rightly so, Anushka, if the period prescribed for retaining books of accounts under GST law under section 36, it is 72 months from the due date of furnishing annual return. So let's take an example of 1718. What is my due date for furnishing annual return was 5th or 7th February 2020. Why 5th and 7th? Because it was varying from one state to another state. 72 months means 6 years. So how long I need to maintain my data, my document, books of accounts? It is coming out 5th or 7th February 2026. Now, GSTN implemented the archival policy. On 1st August 24, they have taken July 17 data. On 1st September 2024, they have taken my August data, whereas I need to maintain and retain my books of accounts. It is going contrary. So what is highly advisable? What need to be done? And maybe rightly so, that is what trade ने कहा कि सर जो retention हमारे books of account का under section 36 है, आप उतना तो आप maintain कीजिए for SME, micro, small and medium enterprises. वो तो बड़े बड़े आपके सॉफ्टवेयर ERP पे काम करता नहीं है, उसके पास सिस्टम स्टोरेज भी नहीं होता. क्लाउड बेस्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्मॉल और माइक्रो वाला क्या जाने. तो कम से कम जीएसटीएन पोर्टल को ये प्रिविलेज तो उनको देना ही चाहिए कि कम से कम जो सेक्शन 36 में हमें डेटा मेंटेन करना है उतनी टाइम तक आप भी रिटेंशन आप भी रखें, आप उसे आर्काइवल में ना ले जाएं. इट्स अ गुड एडवाइजरी. उनने फिर से कह दिया कि हम जुलाई 17 और अगस्त 17 का डेटा जो आर्काइवल में था फिर से हम रीइंस्टेट कर देंगे. सितंबर 17 का भी हम आर्काइव नहीं करेंगे. पर नीचे एक लाइन उन्होंने डाल दी, डिस्क्लेमर कहते हैं ना, हर पिक्चर के नीचे एक डिस्क्लेमर होता है, एक डिस्क्लेमर डाल दिया कि नहीं ये आगे आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट होने वाली है, इसलिए आप लोग डेटा को डाउनलोड कर लें. तो मेरी दो बातें, पहली बात जीएसटीएन पोर्टल से कि आप इसको अलाइन करें सेक्शन 36 के साथ, और दूसरा मैं टैक्स पेयर से कहना चाहूंगा कि ठीक है जब ये एडवांस इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आप डेटा डाउनलोड कीजिए. डाउनलोड करके आजकल कितने स्टोरेज डिवाइस हमारे पास होते हैं, उस स्टोरेज डिवाइस में आप उसे स्टोर कर लीजिए, जिससे कल जब डेटा आर्काइव कर लेगा जीएसटीएन पोर्टल आर्काइव में डाल देगा और आपको नहीं दिखेगा, अगर आपने स्टोर किया होगा तो आपको हेल्प करेगा ना. सो इट इज बोथ वे. मैंने दोनों की बातें रखी. होप इट विल वर्क फॉर द टैक्स पेयर एंड जीएसटीएन बोथ टुगेदर. अनुष्का.
So thank you for giving the suggestion to the GSTN advice to the people of the GSTN and the taxpayers also. And thank you for giving us detailed enlightenment on the recent advisories on GST. This session has been very insightful. Thank you very much, and I will request my all viewers, you can put your comment in a comment box. All the advisory and instruction which we have discussed today is given in the description box. We are trying our best from our side that we can do much and we can do our best. We are trying and providing hand-holding to each one of you. So it will definitely help in your professional endeavors. Stay tuned. Lot of things in GST. Thanks for watching. Thank you very much.